रोज रोज जब मैं ऊपर ही थी ऐसे खाना बनाने के चक्कर, तो जब आवाज़ सुना मैं भाग के गई तो देखा बुलडोज़र वो जो मेरे रेडी है उसे तोड़ने लग गए। तो मैं मना भी करी, वो सुन नहीं रहे थे। तो उनको मैं कह रहा चलो आपने तोड़ दिया कोई बात नहीं, जो मेरा सामान बिखरा है वो सामान मुझे लेने दो। वो इतना बोल रहे रो रो के, तब भी नहीं सुने, सारा सामान उठा के लेके चले गए जी। कोई नोटिस नहीं दिया और ना सुबह हमने पूछे भी है 2-3 बार, जो मीडिया वाले बैठे रहते थे आगे, पुलिस वाले फौजी वाले, 2-3 बार पूछे। जब सामान हटाने गए, जो दरवाज़ा खोल रहे वो कह रहे क्या करोगे, दुकान खोल रहे हो? तो मेरे घर वाला कह रहे नहीं, वो एमसीडी वाले आएंगे ना रेडी पटरी हटाने के लिए, बोले नहीं रेडी पटरी वाले को कुछ नहीं बोलेंगे, जो कबाड़ा कूड़ा है जो बोरा उनको हटाएंगे। तो उनके बात सुन के उन्होंने दरवाज़ा लगा के चले आए। तो जब एमसीडी वाले आए तो कूड़ा कबाड़ा हटाया नहीं है, आके ये जो रेडी पटरी है उनको तोड़ने लग गए। लोग तो बात कर रहे हैं धर्म के लिए, हमें तो इतने हम पड़ोसी में जो पान वाले रहते हैं हिंदू मुसलमान, हम तो सब एक ही साथ रहते थे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इतना दिन से जो मंदिर भी है यहाँ पे, दुर्गा पूजा लगते हैं, मेले लगते हैं यहाँ पे, रामलीला मैदान, कभी भी भेदभाव नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ से बाहर के लोग आए, क्या करा, ये 1 मिनट में सारा बिखर गया। मैं इसलिए सोची पूरा दुनिया, जैसे हमारे जो दुकान में एक जैसे लोन लेके मैं इतनी मेहनत से ये दुकान में थोड़ा खोखा था ये, फिर मैं लोन लेके इसे थोड़ा बड़ा बना के फ्रिज डाला हूँ, सामान भरा हूँ। मेरा 2 लाख का लोन चल रहा है, 1,50 का चल, मेरा कर्जा भी बहुत है। मैं इससे ही घर चलते हैं, इसलिए मैं जब सोचा ये तोड़ दिया है सारा सामान, अब लगाने नहीं देंगे, तो उससे मुझे बहुत टेंशन हुआ था। घर वालों को भी जब थोड़ा बहुत सब ने कहा है, सब आगे आए बढ़ के, बोले आपको मदद मिलेंगे, इसीलिए हमारे दिल में थोड़ा सा तसल्ली है। अब आगे देखते क्या होगा। जो उस दिन जो हमारे सुबह जब पता चला कि एमसीडी वाले आ रहे हैं, रेडी पट्टी साफ सफाई करने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग अपना रेडी बचाव के लिए बाहर निकले थे। इसी गेट के बाहर निकले थे तो पुलिस वाले ने मना कर दिया कि गेट के बाहर मत जाओ और ये कूड़ा सफाई होगा, आपका रेडी पट्टी कुछ नहीं होगा। तो हमने फिर भी बोला सर हम साइड कर लेते हैं, तो कह रहे नहीं कोई साइड मत करो, अपने अपने घर जाओ और अपना आराम से बैठो। तो किसी को अंदर बाहर जाने नहीं दिया। तो फिर टीवी पे देख रहा हूँ कि रेडी पटरी बुलडोजर वाला आया, जितना भी दुकान है सब तोड़ फोड़ रहा है, नोटिस नहीं आया उनके लिए, सबका दुकान तोड़ रहा है, किसी का दुकान उठा के ले जा रहा है। और हमारा जो दुकान है चिकन फ्राई का दुकान है वो उठा के ले गया। उसमें दुकान का सारा सामान रहता है, कड़ा, चूल्हा, गैस और तुम्हारा तेल, मसाला वसाला जितना कुछ सब इंटरली गले में खुले पैसे भी थे, सब दुकान समेत लेके चले गए हमारा। किस चीज़ की दुकान थी? हमारे चिकन फ्राई का दुकान था। दुकान का नाम बिस्मिल्लाह चिकन फ्राई है। तो कितने रुपए का नुकसान हुआ? हमारे 50 से 55 हज़ार का नुकसान हुआ। What is happening right now in last 1 month, we have seen one or 2 months, we have seen that these actions have been taken in and around the neighborhood of Muslim, where there is a mosque or there is substantial population of Muslim, and something has happened, somebody has gone there and created a controversy, and after that controversy, that area where Muslim population is in majority has been targeted. Even in Jahangirpuri,
that is a big area where there are about 15 blocks, and each block would have hundreds of houses. Here, right now, after that incident of Shobha Yatra, one street was targeted in which there are 50 odd houses, and out of those 50 odd houses, 48 are of Muslims. So these are indications which prove this fact that these demolitions are being carried out in those areas where most of the affected persons are Muslims. So I don't think there is any doubt in saying that this is also a targeted attack on a particular community which is Muslim. 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भाजपा और बजरंग दल जैसे कई हिंदू संगठनों ने हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया था। इस दौरान जामा मस्जिद के बाहर पथराव और आगजनी में आम लोगों के साथ 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हालात बिगड़ने पर पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाकर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। हिंसा क्यों भड़की? न्यूज लॉन्ड्री ने दोनों समुदायों के लोगों से बात की और दोनों ने ही अपना यहाँ कभी कोई दंगा के बारे में कोई सुना भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था कुछ। अभी आप इतना सारा फौजी है, कितना सारा बाहर फौजी, आपको लग रहा है यहाँ दंगा होगा? वैसे हमें भी उस टाइम लगा था कि दंगा, ऐसा कोई दंगा कोई चीज ही नहीं है। पता नहीं दंगा किस पर कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उससे पहले 2 रैलियां निकली थी बताया? जी, उनके पहले 2 रैलियां निकली, वो अच्छे तरीके से निकल गया। जो शाम को जो रैली आया, जो कुछ रैली तो बहुत लंबा था। मैं रैली ये कुशल चौक से लेके और मस्जिद तक रैली था, लंबा था। उतना रैली में जो पैदल वाले और बाइक वाले नहीं थे, वो आगे की तरफ आ गए थे, और जो डीजे के साथ जो तलवार वगैरह जो आदमी थे, वहीं से स्टार्ट हो गया था पंगा। मस्जिद के आगे रुकवा दिया और डीजे को जोर से बजाने लग गया। तो अफ्तारी का भी टाइम हो रहा था, तो कुछ मस्जिद से आदमी निकल के आया और बोल रहे कि भाई थोड़ा 2 मिनट 4 मिनट बजा लिया, थोड़ा आगे कर लो। तो कुछ सुनने में आया कि नहीं आगे करेंगे, हम यही बजाएंगे। तो जिसने बोला हम यही बजाएंगे, तो उतने में 2-4 आदमी आके मस्जिद के अंदर झंडा लगाने के लिए चढ़ रहा था। तो कुछ आदमी रोक रहे थे, तो उनके बात नहीं सुन रहा था। पता नहीं बीच में से कितने पत्थर मार दिया, तो भागा दौड़ी हो गया। हमारा दुकान बाहर था, हमने अपना दुकान समेटने लग गए। उनके हाथ में, सबके हाथ में तलवार था, सब कुछ था, हथियार था। उनके एक भी उसमें नहीं हुआ है। और देखो उनके किसको पकड़ा था, एक शुभेंदु सरकार ना कौन है, उनको भी छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया उनको? हमें क्या पता क्यों छोड़ दिया। वो हिंदू है इसलिए छोड़ दिया होगा उन्हें। हम मुसलमान हैं इसलिए हम सबको पकड़ रहे हैं। घर में से बहुत जने को ले जा रहे हैं ऐसे उठा के। कुछ बता भी नहीं रहे जो किस चीज़ में उठा रही है, नहीं उठा रही है। अभी तक कितने लोगों को यहाँ से उठाया है? यहाँ से तो एक 25 तो उठा लिया होगा। अभी और नहीं पता, बस जिसको दिखाया था मोबाइल में, जो टोटल 30, उसमें 30 में से हिंदू के कितना थे, बाकी सब मुसलमान है। 25-26 तो मुसलमान ही थे उसमें। This litigation, recent litigation, which was filed for Jamiyat by Jamiyat in the Supreme Court, and it all started all of a sudden because one day before in the night one notice is circulated, and nobody expected that this action is going to be so quick by the authorities, and so quick, so sudden, and so drastic. So this everything was started by us in the morning at around 8 o'clock, because when the people there started feeling the seriousness of this move by the authorities, then a very short petition was drawn up in the morning in 2 hours, and senior counsel Mr. Dushyant Dave agreed to take up this issue in the Supreme Court. And we all went. Mr. Kapil Sibbal joined it, and then it was appealed to the Honorable Chief Justice of India that see, this is a human problem. These are poor people, and they have not been given notice. And if immediate action is not taken, then most of the houses will go in the air.
And in that background, the court intervened, and that was a welcome move by the Honorable Supreme Court, because these poor would have become homeless if the intervention of the court was not there. But it is very sad that despite the order of the Honorable Supreme Court, the authorities kept demolishing the house, the shops, and whatever encroachment they felt that it was there. Because after the order, the news was flashed everywhere, and everybody knew that this was the order. The media personnel told them, and they said that we will follow the order, but even then they continued this. So that is sad part of that day. But Supreme Court's intervention has worked in protecting many houses, many shops, many poor people's livelihood and right to live with dignity. See, what happened at Jahangirpuri, it should not be seen as an isolated incident. For the past couple of months, there has been numerous occasions at numerous places, especially in Madhya Pradesh and Gujarat, where Muslims have been provocated. So there was some religious procession on the eve of Ram Navami, and then when it entered the Muslim localities, there was an escalation. Why it escalated? Because a group of Hindu protesters, group of Hindu from the congregation, they tried to set up a Bhagwa flag on top of a mosque. That local people protested. So that protest not to let your Bhagwa flag on our mosque led to a kind of violence. And after the violence, as I said, the state started targeting the Muslims that were part of the protest, and the state started targeting these Muslims who are primarily from the very backward section of the backward economic section of the society. So most of the people that this government, whose houses and shops were demolished primarily, they belong to the very poor set of people. So when I went there at Jahangirpuri, I saw hundreds of women who were the sole breadwinner of the family, who were taking care of the family, mostly from the states of Bengal and Assam. They are mostly from that state. And it has been very difficult for them to meet up the ends. But even under those circumstances, these women, these brave women, were doing their sustainable, dignified livelihood. The state declared all the means of livelihood illegal, and they demolished close to some 75 to 80 properties, mostly shops belonging to these Muslims. So one basic question that remains the same: why after the violence, when Muslim protested that we will not let you hoist your flag, your saffron flag on our mosque, why after protesting you started finding out whether these shops are legal or not? Why a particular occasion was chosen? Because this, if it has something to do with illegality, the civic authorities could have done it earlier, but they didn't. So the message that we got was very clear. So wherever Muslim protest, from the Hindutva goons or of the state, whenever Muslim protested with the CA, whenever Muslim protested for the hijab, whenever Muslim protested for anything that related to the derogatory remarks about the Prophet, the state has got a single agenda: your protest, your means of protesting is illegal, and we will demolish it. और बांग्लादेशी बोल कर सबको उठा के जो लेके जा रहा है, बांग्लादेश हम लोग ना जो बोल रहा है बांग्लादेशी हो सकता है उन लोग की हो, हम लोग को उठाने के लिए ऐसे ही बोल रहा है, मुसलमान को नहीं रखने के साजिश कर रहे होंगे उन लोग, बताओ। तो हम लोग तो क्या करें, हम लोग यहाँ पर रहे या ना है, तो इन लोग को सरकार तो बोल सकता है कोई भी,
जो उन लोग को रहने दूंगी या नहीं, हमारा दिल तो हिंदुस्तानी है, फिर भी हम लोग को क्यों बांग्लादेशी बोलते रहते हैं बता। वोट लेने जब आती है सरकार, जब रोहिंग्या नहीं होते हम, वोट लेने के बाद अब उनका काम निकल गया, अब कह रहे हैं हम रोहिंग्या है, और हम तो पश्चिम बंगाल के हैं, हमारा पूरा प्रूफ है वहाँ पे पश्चिम बंगाल हल्दिया के हैं हम, पूरा प्रूफ है हमारा। तो हाँ, सरकार तो मिली हुई है इसमें। और ये केजरीवाल भी वोट लेने आ गया, वोट ले, अब वो भी कहता है इनको रोहिंग्या को यहाँ से भगाओ, ये करो वो करो। तो जब वोट लेने के टाइम पे जब नहीं थे हम रोहिंग्या, जब कैसे सब मुस्लिम में वोट लेके कैसे जीते हो तुम। इनमें तो सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रहा है, तो सरकार जो नौकरी तो दे नहीं रहा, ऊपर से दूसरे का नौकरी छीन रहा है। जो बोलते जी, मोदी जी बोलते थे सबका साथ सबका विकास, ऐसा मेरे को इनके ऊपर लगता नहीं है। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ, देखो इतने दिन से जिस दिन से दंगा हुई दिन से दुकान बने हमारे, अभी भी बने, सबका चल रहे, हमारे आगे पुलिस बैठी है, खोलने भी नहीं दे रहे, फिर आगे तक भी नहीं कह, सब घर पे ही बैठे। अब ये टेंशन, पैसा पैसा, मतलब कितने दिन से हम पैसा खाए, 1 साल 2 साल 2-3 महीने, तो जो रोटी वही तो हमारे छीन गए। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, ये एमसीडी की तरफ से हमारी दुकान दे दें, ये दे देंगे तो हमारी मेरे घर वाले के बच्चे के सबका भविष्य इसी में से जुड़ा है। सरकार से मांग यही करते हैं, जो अब दुकानदारी करके खा रहे थे, कोई मुआवजा तो किसी को मिला भी नहीं है, और हमारे यहाँ के एमएलए तक झांकने नहीं आए। वोट तो लेने के टाइम में वोट ले लेती है। अब सरकार से ये है, जो अपना गरीबों को कम से कम खाने पीने तो दे, कम से कम दुकानदारी करने दे, यही मांग है सरकार से। जो एक घर में बच्चा, जो किसी का बच्चा 4-5 बच्चे है, छोटा एक कमाने वाला, खाना पीना कोई भी काम ढंग का नहीं होता, रूखा सूखा खा रहे। ईद में जो लग रहा है मातम छा गया हो, मातम छा गया, जैसे कैसे घर में कोई मर गया हो, पूरा गली मोहल्ला का हो गया ऐसे, पूरा दिन जैसे जैसे जहांगीरपुरी हो, कहीं भी हो, सबका ऐसे हो गया जैसे कोई मातम छा गया हो, जैसे कोई मातम छा गया हो। तो ऐसे हम लोग कितना दिन जियो हम लोग, बताओ। ऐसे डर के या हम लोग पुलिस से हो, किसी से भी हो, डर के मतलब कैसे जियो हम लोग, तो ऐसे जी नहीं सकता हो ना। सरकार के अभी तक भी कोई फैसला लिया नहीं। और देखो, जिसको पकड़ के लेके आ रहा है, कुत्तों की तरह मार रहा है उसको, गरीब इंसान, किससे 2 लाख, किसी 3 लाख, किसी 2.5 लाख 4 लाख ले रहा है उससे, पैसे जो ले रहा है वो कहाँ से लाके देगा वो। जब वो ईद आया, ईद में परेशानी हो रहा है, सब परेशानी ईद में हो रहा है। अब ऐसे जब परेशान घर में खाना नहीं बनता तो ईद में कैसे करेगा बताओ। In Jahangirpuri, we talk about women empowerment. We talk about creating dignified source of sustainable livelihood. But it is very shameful that when it comes to the poor women at Jahangirpuri, the government neglected all these factors, and in a highly selective and in highly communal, in a highly Islamophobic way, all these shops, majority of them belonging to these poor people, were demolished. So the situation was very pathetic, very chaotic, because once a family loses the sustainable livelihood, the existential crisis begins. So these people, when I met for the first time, they were crying as if what next they would do, how they are going to feed their kids, and how they are going to sustain the education of their wards. So this was very difficult. So if somebody is homeless and he or she makes a small hut or a juggi or a small house for living, and later on it is found that it may be on public land. So in that background, the law requires that the government, before clearing them from the public land, they should have some rehabilitation policy. And if somebody has made some house at some place without their rehabilitation, their houses will be demolished. That is a serious violation of Article 21 and the very basic right to live. Because if you are a human being, you need to have a roof on your head. And if a person has struggled and made roof on his head, the government should not and cannot, as per law, take such action.
See, in context of the recent demolition of Muslim properties across the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat and Uttarakhand, one thing should be very clear, that the demolition has least to do with the illegality of a structure. The demolition is taking place only because of the faith these people have adhered to, only because of the role they are playing in protesting against the various propaganda of the state. One basic question that is very valid to ask is, why after every altercation, why after every issue that comes up in a particular geographical area, you start looking as if the houses that belong to Muslims were built legally or not. If there is something to be done with illegality of the structure, you could have done it, the state authority could have done it at any time. But rather than making it a routine checkup, they wait for some violence to erupt, and then they try to ascertain as if all the Muslim properties in the area, they have been built with legal means or not. So in a nutshell, the demolition that we are seeing is Islamophobic, is communal, and through it the government is giving the very simple message that look, your hijabs are illegal, your mosques are illegal, your houses are illegal, your means of peaceful protest is illegal, and your existence itself is illegal, and the state can any moment come and crush it down. This punishment or this idea of deriving pleasure by punishing Muslims is very prevalent right now, and the Hindu supremacists derive, like, you know, it's a fetish of theirs of sorts to see Muslim house crumbling, to see Muslims going to jail, to see Muslims being demonized and dehumanized on national television day in and day out, and that's their idea of fun. And to all of that, I think we're not willing to give that to them, so we're not going to shed a single tear. And as for the entire Muslim community, I think the community is strong and we'll survive whatever will come. We've survived, like the Islamic history is that we've survived way worse than this.